हेलो एंड वेलकम टू वाइज आईएएस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आज का हमारा टॉपिक है यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन बेसिकली हर एक जगह पे कहीं ना कहीं हमने देखा। यूएन एक्चुअली में है क्या और क्या फंक्शंस हैं, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। The United Nations is an international organization founded in 1945. It is currently made up of 193 member countries. You can see the member countries और the member states. मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लेवल पे जब बात करें तो कंट्रीज को कई बार हम स्टेट्स कहकर भी डिनोट करते हैं। इट्स मिशन एंड वर्क guided by the purposes and principles contained in its founding charter and implemented by its various organs and specialized agencies। तो एक चार्टर के जरिए, फाउंडिंग चार्टर के जरिए इसको बना, और इसके फंक्शंस जो हैं, इसके ऑर्गन और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड्स मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, दुनिया भर में, विश्व भर में अमन और शांति बनाए रखना, एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा बनाए रखना, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार हैं इनको बचाना, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। अब मान लीजिए कुछ नेचुरल कैलामिटीज होती है, कई देश या कई जगहें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो यूएन की तरफ से उनको मदद भेजी जाती है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पूरे विश्व में, और इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी इज्जत करवाना, उसको मनवाना, उसको बढ़ाना, ये सब यूएन के फंक्शंस है। अब यूएन बना कैसे? In 1899, the International Peace Conference was held in The Hague to elaborate instruments for setting crises peacefully, preventing wars, and codifying rules of welfare। कोडिफाई करना मतलब कुछ ऐसे रूल्स बना देना और उसको इन रिटन ले आना, लिखित फॉर्म में जो हो उसको हम कोडिफाइड कहते हैं। तो अमन शांति की स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे रूल्स को कोडिफाई करने की सोची गई। इट अडॉप्टेड द कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड एस्टैब्लिश द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन which began work in 1902। The court was forerunner of UN International Court of Justice, the forerunner of the UN United Nations was the League of Nations, an organization conceived in circumstances of First World War and established in 1919 under the Treaty of Versailles to promote international cooperation and to achieve peace and security। The International Labour Organization was also created in 1919 under the Treaty of Versailles and as an affiliated agency of the League। The name United Nations, coined by United States President Franklin D. Roosevelt, a document called the Declaration by United States was signed in 1942 by 26 nations, pledging their governments to continue fighting together against the Axis powers, Rome, Britain, Tokyo Axis जो था, and bound them against making a separate peace, अमन शांति के लिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में
was attended by representatives of 50 countries and signed the United Nations Charter. The UN Charter of 1945 was foundational treaty of the United Nations as an intergovernmental organization. अब कंपोनेंट्स क्या हैं यूएन के? द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन आर द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में करा, एंड द यूएन सेक्रेटरीट. All these six were established in 1945 when the UN was founded. अब बात करेंगे जनरल असेंबली की. द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन. जनरल असेंबली में ही सारी पॉलिसीज, सारे मते जो हैं वो पास किए जाते हैं. All 193 member states of the UN are represented in the General Assembly, making it the only UN body with universal representation. Each year in September, the full UN membership meets in the General Assembly Hall in New York for the annual General Assembly session. तो साल में एक बार न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली सेशन जो है वो होता है. एंड जनरल डिबेट which may head which many heads of the state attend and address. Decisions on important questions such as those on peace and security and mission of new member and budgetary matters require a two-third majority of the General Assembly. तो जो कुछ भी यहाँ पास होगा 2/3 मेजोरिटी से होगा. डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चंस आर बाय सिंपल मेजोरिटी. तो बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे. अदरवाइज पीस और सिक्योरिटी के रिलेशन में 2/3 मेजोरिटी से. द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व अ 1-year टर्म ऑफ ऑफिस. अब बात आती है सिक्योरिटी काउंसिल. इट हैज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. The Security Council is made up of 15 member states, consisting of 5 permanent members, China, France, Russia, and the UK and the United States, and 10 non-permanent members elected for 2 years term by the General Assembly on a regional basis. In January 2022, the UNSC got 5 new non-permanent members: Albania, Brazil, Gabon, Ghana, and the United Arab Emirates, after Estonia, Niger, Saint Vincent, and the Grenadines. Tunisia and Vietnam finished their terms. Albania is joining the first time, while Brazil is taking the 11th turn. Gabon and Ghana each have been on the council 3 times before, and the UAE is at the first time. India for the 8th time entered the UNSC as a non-permanent member in 2021 and is on the council for 2 years, that is 2021 और 22. A veto power here refers to the power of the permanent member to veto, reject any resolution of the Security Council. The unconditional veto possessed by the 5 governments has been seen as the most undemocratic character of the UN. किसी भी चीज को वो रिजेक्ट कर सकते हैं. Critics also claim that veto power is the main cause for international inaction on war crimes and crimes against humanity. However, the United States refused to join the United Nations in 1945 unless it was given a veto. The absence of United States from the League of Nations contributed to its ineffectiveness. Supporters of the veto power regard it as the promoter of international stability, a check against military interventions,
and a critical safeguard against US domination. अब आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। अब इकोसॉक एक ऑर्गन के तरीके से, यूएन का एक ऑर्गन के तरीके से काम करता है। इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन द इकोनॉमिक, social and environmental issues, as well as implementation of internationally agreed development goals. It has 52 members. It has 52 members elected by the General Assembly for overlapping 3-year terms. It is the United Nations central platform for reflection, debate, and innovation thinking on sustainable development. Each year, ECOSOC structure its work around an annual theme of global importance to sustainable development. This ensures focused attention among ECOSOC's array of partners and throughout the UN development system. It coordinates the work of 14 UN specialized agencies, 10 functional commissions, and 5 regional commissions, receives report from 9 UN funds and programs, and issue policy recommendations to the UN system and to member states. अब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स FAO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, हमने पढ़ा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO, अब है ट्रस्ट काउंसिल. It was established in 1945 by the UN Charter. Under Chapter 13, Trust Territory is a non-self-governing territory placed under an administrative authority by the Trustship Council of the United Nations. A League of Nations mandate was a legal status for certain territories transferred from the control of one country to the another following World War I, or the legal instruments that contained the internationally agreed upon terms for administering the territory on behalf of the League of Nations. Very simple. United Nations Trust Territories. United Nations Trust Territories were the successors of the remaining League of Nations mandate and came into being when the League of Nations ceased to exist in 1946. It had to provide international supervision for 11 trust territories has had been placed under the administration of 7 members, and ensure that adequate steps were taken to prepare the territories for self-government and independence. By 1994, all trust territories has attained self-government and independence. The Trustship Council suspended operation on 1st of November 1994. अब आ गया International Court of Justice. In the previous lecture, we have in detail discussed about the ICJ. The International Court of Justice is the principal judicial organ of the United Nations. It was established in June 1945 by the Charter of UN
and began work in 1946, April 1946. The ICJ is the successor of the Permanent Court of International Justice, which was established by the League of Nations in 1920. The next is your secretariat. The secretariat comprises the Secretary General and tens of thousands of international UN staff members who carry out the day-to-day work of the UN as mandated by the General Assembly and the organization's other principal organs. तो support staff जो है वो सारा इधर है. The Secretary General is the Chief Administrative Officer of the organization appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for the 5-year renewable term. The UNGA, UN General Assembly, has also appointed Antonio Guterres as the ninth UN Secretary General for a second term beginning 1st January 2022 and ending 31 December 2026. UN staff members are recruited internationally and locally and work in duty stations and on peacekeeping missions all around the world. अब यूएन कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड की अगर बात करें, क्या यूएन ने कंट्रीब्यूट करा दुनिया पीस एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी by sending peacekeeping and observer missions to the world trouble spots over the past 6 decades, पिछले 60 सालों में the United Nations has been able to restore calm, allowing many countries to recover from conflict. पीस कीपिंग और ऑब्जर्वर मिशंस दुनिया के ऐसी कोनों में भेजना जहां पे दिक्कतों का सामना हो रहा है और वहां पे अमन और शांति का संदेश फैलाना और उस कन्फ्लिक्ट को होने से पहले ही सॉल्व कर देना. प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर proliferation. For over the 5 decades, the International Atomic Energy Agency (IAEA) International Atomic Energy Agency has served as the world's nuclear inspector. IAEA experts work to verify that safeguarded nuclear material is used only for the peaceful purposes. To date, the agency has safeguarded agreements with more than 180 states. तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं प्रॉपर सेफगार्ड्स उनके साथ रहें और वो बिना बात के ऐसे ही इस्तेमाल न कर दिए. और जब भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स वो सेफगार्ड्स के साथ. supporting disarmament. UN treaties are the legal backbone of disarmament efforts. The Chemical Weapons Convention 1997 has been ratified by 190 states. The Mine Ban Convention 1997 162 states द्वारा and the Arms Trade Treaty 2014 69 states. At the local level, the UN peacekeepers often work to implement disarmament agreement between warring parties. Preventing genocide. The United Nations brought about the first ever treaty to combat genocide. Acts committed with the intent to destroy a national, ethnic, and racial or religious group. The 1948 Genocide Convention has been ratified by 146 states, which commits to prevent and punish actions of genocide in war and in peacetime. The UN tribunals for Yugoslavia and
Rwanda, as well as the UN supported courts in Cambodia, have put would be genocide preceptors on notice that such crimes would no longer be tolerated. Uniting for Peace Resolution. About UN General Assembly Resolution 377V is known as Uniting the Peace Resolution, which was adopted in 1950. The most important part of the resolution is Section A, which states that where the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility to the maintenance of international peace and security, the General Assembly shall seize itself of the matter. The Uniting for Peace resolution was initiated by the United States in October 1950 as a means of circumventing further Soviet vetoes during the course of Korean War. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, प्रोमोटिंग डेवलपमेंट सिंस 2000, promoting living standards and human skills and potential throughout the world have been guided by the Millennium Development Goals. The UN Development Program UNDP supports more than 4,800 projects to reduce poverty, promote good governance, address crimes, and preserve the environment. The UN Charters, the UN Children Funds, UNICEF, works to more than 150 countries, primarily on the child protection, immunization, girls' education, and emergency aid. The UN Conference on Trade and Development, UNCTAD, helps developing countries make the most of their trade opportunities. The World Bank provides developing countries with loans and grants and has supported more than 12,000 projects in more than 170 countries since 1947. Then next is your elevating rural poverty. The International Fund for Agriculture Development, IFAD, provides low interest loans and grants to very poor people, focusing on African development, African countries, to be a high priority for the United Nations. The continent receives 36% of the UN system expenditure for development, the largest share among the world's regions. The UN agencies have special programs to benefit Africa. Promoting women well-being, UN Women in the UN organization dedicated to gender equality and the empowerment of women. Next is your for fighting hunger. The Food and Agriculture Organization of UN, FAO, leads global efforts to defeat hunger. FAO also helps developing countries to mobilize and improve agriculture, forestry and fisheries practices in way that conserve natural resources and improve the nutrition level. तो वेरी सिंपल, हमने ये चीजें पहले भी एक बार देखी. कमिटमेंट इन सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन. यूनिसेफ जो है ये चिल्ड्रन की सपोर्ट के लिए बनाया गया. हैज पायनियर्ड टू प्रोवाइड वैक्सीन एंड अदर desperately needed by children caught in armed conflict. The Convention on the Rights of Child 1989 has become law in nearly all the countries. Tourism. The World Tourism Organization is the UN agency responsible for the promotion of responsible, sustainable, and universally acceptable tourism. The Global Code of Ethics for Tourism seeks to maximize the benefit of tourism while minimizing the negative impact.
global think tank. The United Nations is at the forefront of research for seek solution to global problems. Likewise, there is Niti Aayog for the government of India. UN is there as a think tank for the world problems. The UN Population Division is a leading source of information and research on the global population trends, producing, producing up to date demographic estimates and projections. The UN Statistics Division is the hub of global statistical system, compelling the disseminating global economic, demographic, social, gender, environment, and energy statistics. The United Nations Development Program's Annual Human Development Report provides independent, empirically grounded analysis of major development issues, trends, and policies, including the ground-breaking Human Development Index, the United Nations World Economic and Social Survey, the World Bank's World Development Report, the International Monetary Fund's World Economic Outlook, and other studies help policymakers to make informed decisions. Next is your social development. Preserving historical, cultural, architectural, and natural sites, the UNESCO has helped 137 countries to protect ancient monuments and historical and cultural natural sites. It has negotiated international convention to preserve cultural property, cultural diversity, and outstanding cultural and natural sites. More than 1,000 such sites have been designated as having exceptional universal value as वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है. टेकिंग द लीड ऑन ग्लोबल इश्यूज. तो जितने भी हमारे पास ग्लोबल इश्यूज आते हैं उसके ऊपर यूएन इज द वन that takes the lead on the global issues, that is there to resolve those global issues. Let me grab a sip of water, please. Yes. तो हमारे पास वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इश्यूज होते हैं, यूएन इज द थिंक टैंक, यूएन इज द बॉडी, यूएन इज द ऑर्गेनाइजेशन that is there to resolve these issues with the main principle of sustainable development, maintaining peace and security. So UN is there to take a lead on those issues, to resolve those issues between the member countries. UN through its specialized agencies act differently in order to tackle them. Let us begin. The first United Nations Conference on the Environment, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1972 की, हेल्प टू अलर्ट वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन ऑन द डेंजर्स फेस्ड बाय आवर प्लैनेट, ट्रैकरिंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट. यानी कि वातावरण के साथ जो आज का खिलवाड़ हो चुका है और जो उसके साथ हो चुका है और गवर्नमेंट्स का एक्शन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ये चर्चा में था. द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, मैक्सिको सिटी 1985 में, पुट विमेन्स राइट, इक्वलिटी एंड प्रोग्रेस ऑन द ग्लोबल एजेंडा. पहली बार विमेन के लेकर, उनके अधिकारों के लिए यूएन में
ये ग्लोबल एजेंडा पे आया। द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वाज इन मैक्सिको सिटी 1985 में, विमेन के लिए रिलेटेड। अदर लैंडमार्क इवेंट्स इंक्लूड द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स बहरीन में हुआ था 1968। द फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बुचारेस्ट में हुआ था 1974 में। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुई थी 1979 में। Those events brought together experts and policymakers as well as activists from around the world in prompting sustained global action। कि हमें सस्टेन्ड ग्लोबल एक्शन किस तरीके से लॉन्च करना विद द कोऑपरेशन ऑफ एवरी। Regular follow-up conferences have helped to sustain the memorandum. Next is for your human rights. UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948. मानव अधिकार जिसे हम कहते हैं। It has helped to enact dozens of legally binding agreements on political, civil, economic, social, and cultural rights. UN human rights bodies have focused world attention on the cause of torture, disappearance, arbitrary detention, and other violations। किन किन चीजों को टैकल कर रहे हैं? टॉर्चर, डिसअपेयरेंस, आर्बिट्री डिटेंशन, किसी को टॉर्चर करना, किसी को गायब कर देना, आर्बिटरी डिटेन कर देना, मन मर्जी से जब चाहे उठा लो, उसके विरुद्ध। फॉस्टरिंग डेमोक्रेसी। The UN promotes and strengthens democratic institutions and practices around the world, including by helping people in many countries to participate in free and fair elections। तो डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा है और ये प्रमोट किया जा रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन रहे इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। In the 1990, the UN organized or observed landmark elections in Cambodia, El Salvador, South Africa, Mozambique, Timor Leste. More recently, the UN has provided crucial assistance in elections in Afghanistan, Burundi, the Democratic Republic of Congo, Iraq, Nepal, Sierra Leone, and Sudan। तो इस तरीके से यूएन इज पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स डेमोक्रेसी टू। नेक्स्ट इज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सबसे पहले जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आता है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट डिमांड्स अ ग्लोबल सॉल्यूशन। The Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC), which brings together 2,000 leading climate change scientists, issue comprehensive scientific assessment every 5 or 6 years। 2000 से ज्यादा साइंटिस्ट एक साथ मिल जाते हैं और गाइडलाइंस इशू करते हैं। IPCC was established in 1988 under the auspices of the United Nations Environment Program (UNEP) and the World Meteorological Organization for the purpose of assessing the scientific, technical, and socio-economic information relevant for the understanding of the risk of human-induced climatic change। इंसान के दखल की वजह से किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हो सकता है उसके ऊपर चर्चा। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज UNFCCC provided foundation for UN members to negotiate agreements to reduce emissions that contribute to climatic change and help countries adopt
to its effects. UNFCCC 1992 is an international environmental treaty adopted by and opened for signatures at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. Global Environmental Facility, which brings together 10 UN agencies, funds projects in the developing countries. Protecting the ozone layer, the UNEP, and the World Meteorological Organization have been instrumental in highlighting the damage caused in the Earth's ozone layer. Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer 1985 provided for the framework necessary to create regulatory measures for the international reduction in production of chlorofluorocarbons. Convention provided foundation for Montreal Protocol. The Montreal Protocol 1987 is an international environmental agreement with universal ratification to protect the Earth's ozone layer by eliminating the use of ozone depleting substances ODS such as chlorofluorocarbons CFCs and halons. किगाली अमेंडमेंट टू दी मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 की, was adopted to phase down production and consumption of hydrofluorocarbons worldwide. अब बात आती है इंटरनेशनल लॉ की. इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि पूरे विश्व के लिए है. इंडियन लॉ कहते हैं जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाया है और इंडिया के अंदर अप्लाई होता है. इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनली बना और पूरे दुनिया के ऊपर अप्लाई. प्रोसिक्यूटिंग वॉर क्रिमिनल्स. By prosecuting and convicting war criminals, the UN tribunals established for the former Yugoslavia and for Rwanda have helped to expand international humanitarian and international criminal law, dealing with genocide and other violators of international law. The International Criminal Court is an independent permanent court that investigates and prosecutes persons accused of most serious international crimes, genocide crimes against humanity and war crimes, it, if national authorities are unwilling or unable to do so. Helping to resolve major international disputes. By delivering judgments and advisory opinion, the International Court of Justice (ICJ) has helped to settle international disputes involving territorial questions, maritime boundaries, diplomatic relations, state responsibility, the treatment of aliens, and the use of force, among others. Stability and order in the world's ocean. The 1982 Convention on the Law of the Sea, which has gained nearly universal acceptance, provides the legal framework for all the activities in the oceans and seas. It also includes mechanism for settling the disputes. The next is for your health, promoting reproductive and maternal health. United Nations Population Fund UNFPA, United Nations Population Fund, is promoting the right of individuals to make their own decisions on the number and spacing of children through voluntarily family planning programs. Responding to HIV/AIDS, United Nations Program on HIV/AIDS, UNAIDS इसे कहते हैं, coordinates global action against the epidemic and affect some 35 million people. Wiping out polio. Poliomyelitis has been eliminated from all but 3 countries: Afghanistan, Nigeria, and Pakistan, as a result of global polio eradication initiative. Eradicating smallpox,
a 13-year effort by the World Health Organization, resulted in smallpox being declared officially eradicated from the planet in 1980. तो इस तरीके से यूएन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं। यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट एजेंसीज को अपने अंदर संजोए हुए है, और बाकी सारे नेशंस जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो मैटर्स आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, जो डिस्प्यूट्स आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यूएन काम करता है। तो इस तरीके से at the world level for maintaining peace and security, UN plays a very important role. आईसीजे भी यूएन का एक पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने आईसीजे के बारे में करा, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और बहुत सारी एजेंसीज हमने अभी देखी। ये सारी की सारी यूएन के अंदर रह के काम करती हैं, और यूएन की जनरल असेंबली द्वारा जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं यूएन की जनरल असेंबली में फॉर्मुलेट, सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं यूएन की जनरल असेंबली में फॉर्मुलेट होती हैं, और देयर इज अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ। सेक्रेटेरियल स्टाफ में सारा का स्टाफ सपोर्ट स्टाफ आप उसे कह सकते, और इसके अलावा बाकी जो एजेंसीज हैं वो उस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि उसके अंदर वेटो पावर है टू रिजेक्ट द रेजोल्यूशन। कुछ कारणवश इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर। अब वो क्यों नहीं है, दैट इज इन न्यूज, यू कैन लिंक दिस टू योर करंट अफेयर्स। इसके अलावा आईसीजे का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसके ऊपर पूरा लेक्चर में एक डिटेल डिस्कशन में देखा आईसीजे का भी, तो आज मैंने इतना ज़्यादा एनमरेट नहीं किया उसको, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यूएन पे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, वो यूएन की किसी एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा कि मेजर रूल ऑफ यूएन क्या है और इश्यूज क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ही पूछा जा सकता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज मेड वेरी सिंपल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।